डियर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ। इट्स फनी हाउ समटाइम्स मैं आंखें बंद करते ही वापस वहीं चली जाती हूँ, अपने हॉस्टल रूम में। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती थी कि क्या मैं घर से दूर ठीक से रह पाऊँगी, कहीं मैं अकेली तो नहीं रह जाऊँगी, अकेले चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं, क्या मुझे उन मूवीज़ की तरह एक अच्छा सर्कल मिलेगा कि नहीं, तबीयत ख़राब होगी तो मम्मी पापा के बिना कैसे संभालूँगी, वगैरह वगैरह। अब इन सब बातों से ये तो समझ आ गया होगा कि अकेलेपन से डर लगता था मुझे। आई हैड द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट और जस्ट द फियर ऑफ बीइंग अलोन। इन शॉर्ट मुझे लगता था कोई अकेले कभी खुशी नहीं रह सकता। तो बस इसी अच्छे सर्कल ढूंढने की उम्मीद में स्टार्ट हो गई थी मेरी कॉलेज और हॉस्टल लाइफ। अब कॉलेज में पढ़ाई, असाइनमेंट्स, एग्जाम, स्ट्रेस वगैरह वगैरह तो होते ही हैं, बट इन दिस वीडियो आई वांट टू फोकस ऑन मेनी अदर लाइफ लेसन्स एंड थिंग्स दैट दिस फेज ऑफ माई लाइफ टॉट मी। तो कॉलेज में जाते ही मुझे एक सीनियर रूममेट मिली हु वॉज इन हर फाइनल ईयर ऑफ BSc। अब मुझे तो डर लग गया था कि सीनियर है, पता नहीं कैसे रहेगी मेरे साथ, बट जितना प्यार, जितनी केयर और जितने मज़े उन्होंने करवाए वॉज मेमोरेबल। सो थैंक्स टू हर फॉर ऑल दोज मोमेंट्स। फिर धीरे धीरे मुझे मिले और मेरे साथ के फ्रेशर्स जिनसे दोस्ती हुई, बातें हुई, बट सिंस आई जॉइन द कॉलेज 1 to 2 weeks लेट, आई थॉट सबका तो ग्रुप बन ही रखा होगा, तो पता नहीं इफ़ आई विल बी इन्वॉल्व्ड इन एनी ग्रुप और नॉट, बट आई वॉज इन्वॉल्व्ड। अब इन्हीं बाकी सारी फ्रेशर्स के साथ मिलकर वी स्टार्टेड आवर हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ। वो वियर्ड मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड होम सिकनेस वाली फर्स्ट नाइट इन हॉस्टल से लेकर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। अब हालांकि आई यूज्ड टू शेयर फूड विद माई ब्रदर, but hostel life taught me how to share everything from food, clothes, and even problems with each other. And suddenly, mine turned into ours. Whether it be taking care of friend who is sick, crying together, sharing stories while eating that not so good mess ka khana, sleeping together in one room, and converting normal weekend nights to sleepover. Sometimes talking throughout the night with zero sleep and then sleeping after breakfast on Sundays. And have fun and cracking lame jokes like this one. क्या आपको पता है बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता है? बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं बिल लाई। यहाँ जोड़ डालिए, यहाँ देखिए, बिल। We all learned to share, care, and be open to adjustments as we lived in one room with 3 roommates, and we all found our own space in between of these fun and chaotic moments. We all felt that first real sense of responsibilities as there was no one to wake you up, remind you to eat, or to stop binge watching all night. But we all, somewhere or the other, became like a family who heard your rants, pulled us out of our low phases, reminded us about various things, complained together about the mess food, yet felt comforted when they served food something even a bit similar to home food. Now, there were some bitter moments too, after which we all discovered who are the real ones and who are just classmates. This made us understand that it does not matter कि आपका बहुत ही बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है. What matters is that the group which you have consists of real friends or not. There are just so many memories like visiting cafes, celebrating birthdays, visiting few famous places, watching sunset on rooftop, the fest season, celebrating festivals like Holi, Diwali, Navratri, Janmashtami, and many more all together. Happy Dashera! Happy Holi! Happy Navratri!
Facing an inconvenience together and yet making it fun to survive. Getting to know more people from college clubs, getting to know more about yourself. All the late night study sessions before exams, getting ready together, gossiping, etc., etc., and the list goes on. Now, very soon came the time when friends shifted to flats and PGs, but I kept staying in hostel. Or dost bane, who became close too, and I made another very close friend who was always with me from the very beginning. But I didn't care about her that much, और वो थी मैं. Living alone made me realize कि as much as I cared for my friends, उतना ही मुझे अपने खुद का ध्यान भी रखना चाहिए. This room where I lived alone for a year saw how I handled ups and downs alone. The tree outside my window felt like a friend too, who was there, present for me in the bright days and in the rainy days both. So yeah, my college and hostel life played a major role in teaching me that I am my best friend too. I feel bad about not caring about myself enough during my school years. So I am thankful for this experience that made me realize this. I'm thankful for the struggles that made me stronger. I'm thankful for the friendships that became so much like family. I'm thankful for the freedom that shaped my personality. I'm thankful for the mistakes that taught me lessons. And I'm thankful for the memories that will always bring a smile no matter how old I get. तो ये हैं कुछ life lessons that I have learned. That how to survive on your own and manage things. What is the true meaning of friendship? The resilience as the hostel life toughens you up from dealing homesickness or failures or problems on your own. And appreciation for home, realizing the value of everything that we take for granted. Freedom and responsibility, balancing late night fun with deadlines and learning accountability. Lastly, I got the memories that will last forever. So, dear college and hostel life, I'm thankful for all these memories, experience, people, and for the most memorable experience. Last day and last few hours in my hostel room.